Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start the next problem, that is problem number 3. So far we have done two main problems and two short problems on this internal reconstruction. So we have seen how to pass the entries, what are the general entries required for capital reduction and how to write off the assets. Now see the third problem number 3. Rajendra Company Limited passed necessary resolution and received sanction of the court to reconstruction as follows. 25,000 preference shares of 20 each fully paid to be reduced to the same number of shares of rupees 15 each. So presently the company is having 25,000 preference shares. The face value 20 rupees. So we cancel this. 20,000 into 25. 5 lakh rupees will cancel. And new shares, new preference shares will issue. The face value will be 15 rupees. So 20,000 into 15. Remaining balance will transfer to reconstruction account. 25,000 equity shares of rupees 15 each fully paid to be reduced to the same number of shares of rupees 5. So equity shares earlier the face value was 15 rupees. Now we have to cancel and issue new shares of rupees 5 each. Writing off rupees 1,50,000 debit balance in profit and loss account. To reduce plant and machinery by 80,000 and goodwill by 20,000. To reduce investment value by 60,000. Write journal entries necessary to record the above and show how capital reduction account in the books of Rajendra Company Limited. So we have to pass the journal entries and we have to prepare one ledger account, capital reduction account. Now, see here. First of all, journal entries, preference share capital old 20 rupees. The face value of each share was 20 rupees. How many shares are there? 25,000 shares. So 25,000 into 20, 5 lakh rupees old preference share capital cancelled. Now new preference share capital issued. So to preference share capital new. Same number 25,000 into 15. You will get 3,75,000. तो पुराना जो preference share capital 5 लाख रुपए cancel कर दिया, नया preference share capital 3,75,000 issued. Remaining balance 5 lakh minus 3,75,000. 1,25,000 will be transferred to capital reduction account. There are different names. We can call it as capital reduction, reconstruction, reorganization, like that. Now in the problem it is given capital reduction, that's why we are using capital reduction. Narration being the old preference share capital cancelled and new preference shares issued as per reconstruction scheme. Similarly, the old equity share capital face value was 15 rupees. That will be cancelled. So 25,000 into 15, 3,75,000. Old equity share capital cancelled. New equity shares were issued, the face value will be 5 rupees. So 25,000 into 5, 1,25,000. New equity share capital issued. Balance will be transferred to capital reduction account. So 3,75,000 minus 1,25,000. 2,50,000 balance will be transferred to capital reduction account. That's it. Now we have to use this capital reduction account to write off and write down the assets. So capital reduction account is created by 1,25,000. Capital reduction account is created by 2,50,000. So 1,25,000 plus 2,50,000. 3,75,000 amount is there in capital reduction account. So debit kar denge. Now we will write off each asset. It is given in the problem to write off 1,50,000 debit balance in P&L account. P&L account में 1,25,000 write off. So to profit and loss account 1,50,000. Next, to reduce plant and machinery by 80,000. It is given in the problem to reduce plant and machinery by 80,000. To plant and machinery 80,000. To reduce goodwill by 20,000. So to goodwill 20,000. To reduce investment by 60,000. To investment 60,000. That's all. That's all. Now, if you deduct 3,75,000 minus 1,50,000 minus 80 minus 20 minus 60, still some amount is remaining in capital reduction.
So that remaining amount will be transferred to capital reserve, balancing figure. तो बचा हुआ 3,75,000 में से ये 4 अमाउंट्स माइनस कर दिए तो स्टिल अमाउंट 365,000 बच रहा. That amount will be transferred to capital reserve. तो narration, being the fictitious assets written off and other assets written down as per reconstruction scheme, and the balance is transferred to capital reserve. That's it. So journal entries are over. Now we are required to make the capital reduction account. So capital reduction account. Now see here. These entries I am posting it into capital reduction account. First entry, preferential capital account data to preferential capital new to capital reduction. So capital reduction is credited by 1,25,000. Capital reduction account is credited by 1,25,000. तो क्रेडिट साइड बाय प्रेफरेंशियल कैपिटल 1,20,000. इसका ऑपोजिट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है तो ये क्रेडिट का ऑपोजिट क्या आएगा? प्रेफरेंशियल कैपिटल. तो बाय प्रेफरेंशियल कैपिटल 1,25,000. तो फर्स्ट एंट्री पोस्टेड. सेकेंड एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 2,50,000. यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करना है 2,50,000. इसका ऑपोजिट डेबिट क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल. तो by equity share capital 2,50,000. First two entries are posted to capital reduction. Now third entry we have to post. Capital reduction account is debited by 3,75,000. So debit side we'll take all credits. तो capital reduction account को डेबिट करना है. इसका ऑपोजिट में ये सारे क्रेडिट्स है तो ये सारे क्रेडिट्स को यहाँ डेबिट साइड पे ले लेंगे. To profit and loss account, to plant and machinery, to goodwill, to investment, to capital reserve. That's all. Both the sides will be equal, 3,75,000. This is the capital reduction account. It is asking you to make journal entries and capital reduction account. Both we have prepared. Now come to the next problem, that is problem number 4. On reconstruction of a company, the following terms were agreed upon. The shareholders was to receive in lieu of their present holdings, namely 50,000 shares of rupees 10 each, the following. अब देखिए, presently the equity shareholders are 50,000 shares. The shareholders are having 50,000 equity shares. Each share face value 10 rupees. Now the company proposes to cancel this equity share capital. तो पहली एंट्री हो जाएगी equity share capital old rupees 10. Account data 50,000 into 10, 5 lakh. 50,000 shares into 10 rupees, 5 lakh. तो 5 लाख रुपीस इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसको क्लोज कर दिया, डेबिट कर दिया. उसके बदले में इन ल्यू व्हाट द कंपनी इज इश्यूइंग? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग. फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग. 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग का मतलब प्रेजेंटली दे वे होल्डिंग 50,000 शेयर्स. 50,000 का 2/5, 50,000 into 2/5, you will get 20,000. तो 50,000 जो शेयर्स थे उसको कैंसिल कर दिए. अब उसके बदले में 2/5 of 50,000, 20,000 नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं. कितने में इश्यू करेंगे? सेम प्राइस. पहले क्या था? 10 रुपीज था. अब 20,000 into 10, 2 लाख. तो पहले के 5 लाख रुपए के शेयर्स कैंसिल हो गए, उसके बदले में 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स. 5% preference shares fully paid to the extent of 1/5 of the above new equity shares. अभी जो नए इक्विटी शेयर्स जो इश्यू करे वो 20,000 शेयर्स इश्यू करे. वो 20,000 का 1/5, 20,000 into 1/5, you'll get 4,000. तो 4,000 नए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं. ऑफ द 4,000 into 10, 40,000. 40,000 रुपए के नए शेयर्स इश्यू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स. एंड 60,000 6% सेकेंड डिबेंचर्स, 60,000 रुपए के डिबेंचर्स भी इश्यू कर रहे हैं. अब देखिए, पहले 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड, क्लोज्ड. अब उसके बदले में 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, 40,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं और 60,000 रुपीज के डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं. तो 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, 3 लाख रुपीज already. Remaining 2 lakh rupees will be transferred to capital reduction account or reconstruction account. Then an issue of 50,000 rupees, 5% first debenture was made and allotted.
पेमेंट फॉर द सेम हैविंग बीन रिसीव्ड इन कैश। पब्लिक में 50,000 रुपए के नए फर्स्ट डिबेंचर्स इश्यू करे, वो पूरे पैसे आ गए। द गुडविल विच स्टूड एट 3 लाख रुपीज वाज टू बी रिटर्न डाउन टू 1,50,000। बैलेंस शीट में गुडविल 3 लाख रुपीज का था, उसको राइट डाउन करके 1,50,000 कर देंगे, तो रिमेनिंग 1,50,000 वी हैव टू राइट ऑफ। The plant and machinery which stood at 1 lakh rupees were to be returned down to 75,000. तो प्रेजेंटली प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 1 लाख था, उसको कम करके 75,000 पर लाना है, तो 25,000 रुपीज वी हैव टू राइट ऑफ। Freehold and leasehold premises which stood at 1,50,000 were to be returned down to 1,25,000. तो प्रेजेंटली 1,50,000 है freehold leasehold property, उसको कम करके 1,25,000, and 25,000 rupees we have to write off on freehold leasehold property. Make journal entry in the books of the company necessitated by the above reconstruction. Only journal entries we have to pass. Fourth problem. Equity share capital account data 10 rupees 5 lakh. ये पुराना equity share capital है, 50,000 shares थे into 10 rupees 5 lakh डेबिट कर दिया। अब उसके बदले में new equity shares are issued to the extent of 2/5 of their present holdings. 2/5 of the present holdings. Present holding 50,000 है, 50,000 into 2 by 5, 20,000 shares are issued. तो 2 equity share capital new 10 rupees each, 50,000 into 2 by 5, 20,000 नए शेयर्स देंगे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2 लाख रुपीस के न्यू इक्विटी शेयर्स, एंड इट इज गिवन दैट प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू 1/5 ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स, 1/5 ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स। तो न्यू इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू करें? 20,000 इश्यू करें। ये 20,000 का 1/5, तो 20,000 इंटू 1 by 5 इट कम्स टू 4,000। तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड, ईच शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो 4,000 इंटू 10 40,000। नाउ टू 6% secured debentures, 6% secured debentures 60,000। तो 5 लाख रुपीस के बदले में 2 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 60,000 डिबेंचर्स, ये पे कर रहे हैं। तो कितना हो गया? 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, 3 लाख रुपीस हो गए। अभी 2 लाख रुपीस बचे, उसको ट्रांसफर कर देगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन 2 लाख। दैट्स ऑल, फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड। सेकेंड एंट्री रिगार्डिंग 5%, 50,000 के 5% डिबेंचर्स वर इश्यूड टू द पब्लिक एंड रिसीव्ड द कैश। Bank account data to 5% first debentures 50,000, being the debentures issued to the public and received the cash. Third entry will be writing off of the asset. अब assets को write off करें। Reconstruction account data 2 lakh। देखिए फर्स्ट एंट्री में यहाँ पर क्रेडिट कर दिए थे 2 लाख, सेकेंड एंट्री वी डोंट हैव रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 2 लाख, दैट 2 लाख रुपीस इज डेबिटेड। गुडविल रिटन ऑफ बाय 1,50,000। तो प्रॉब्लम में दिया कि प्रेजेंटली गुडविल का वैल्यू 3 लाख रुपीस है, उसको कम करके 1,50,000 पर ला लो, तो रिमेनिंग 1,50,000 राइट ऑफ टू गुडविल रिटन ऑफ 1,50,000। टू प्लांट एंड मशीनरी को 25,000 कम कर देना। टू लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 25,000 रुपीस कम कर। टोटल देखो 150 प्लस 25 प्लस 25 2 लाख रुपीस, नथिंग इज लेफ्ट। अगर पैसा बचता तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, वी डोंट हैव एनी लेफ्ट आउट अमाउंट। Being the intangible assets and other assets written down to its true value as per the reconstruction scheme. That's all. This is the problem number 4. Now we'll come to the problem number 5. Fifth problem. Venkata Girija Company Limited passed necessary resolution and received sanction of the court for the reduction of its share capital by rupees 2,50,000 for the purpose enunciated hereunder. So this company has taken the permission from the court to reduce the capital by rupees 2,50,000. अब ये 2,50,000 को कैसा राइट ऑफ करेंगे, यहां पर दे दिया है टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। P&L account debit balance we have to write off by 1,50,000. To reduce the value of plant and machinery by 40,000 and goodwill by 20,000. To reduce the value of investment to market value by writing off 40,000. The reduction was made by converting. अब वो 2,50,000 रुपए का जो परमिशन मिला कोर्ट से, कैसे मिला? How the capital is reduced, that is given here. The reduction was made by converting 25,000 preference share of 20 each fully paid to the same number of preference share of 15 rupees each fully paid. Presently the company is having 25,000 preference shares.
ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 20 रुपीज। अब वो 20 रुपीज के फेस वैल्यू को कैंसिल करके नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे 15 रुपीज। द रिमेनिंग बैलेंस विल ट्रांसफर टू capital reduction account or reconstruction account, and by converting 25,000 equity share of 20 each, 15 paid up into 25,000 equity share of 10 each fully paid। तो 25,000 इक्विटी शेयर जो 20 रुपए का था लेकिन 15 रुपए कॉल्ड अप था, पेड अप था, वो 15 रुपए के शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे 10 रुपीस के शेयर्स। Show journal entries necessary in relation to the reduction of share capital and show how they would deal with the balance of the share capital account। Fifth problem. Preference share capital account 20 rupees. So presently 25,000 preference shares are there. Each share face value 20 rupees. So 25,000 into 25 lakh cancelled. Ab new to preference share capital new 15 rupees. So 25,000 into 15 3,75,000. तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख था, कैंसिल कर दिया, नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,75,000 इश्यू कर दिया। रिमेनिंग बैलेंस इज ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,25,000। Being the old preference share capital cancelled and new preference shares issued as per reconstruction scheme. Now equity share capital, similar procedure. Old equity share capital was 25,000 shares of rupees 20 each, 15 rupees paid up, 15 रुपये paid up था। तो 25,000 into 15 3,75,000 old equity share capital cancelled and new equity shares issued। तो 25,000 shares into 10 rupees 2,50,000। balance reconstruction account 1,25,000। being the old equity share capital cancelled and new equity share issued as per reconstruction scheme। Now third, now reconstruction account is created by 125. Here reconstruction account is created by 125. So 2,50,000 we are having in reconstruction account. Now we'll write off the assets. To profit and loss account 1,50,000. To plant and machinery 40,000. To goodwill 20,000. To investment 40,000. Everything is given in the problem. कौन से asset को कितना कितना कम करना है problem में दे दिया। तो we have taken all the items. Nothing is left. No balancing figure. अगर balancing figure रहता तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। वी डोंट हैव एनी कैपिटल रिजर्व। बीइंग द फिक्टिशियस असेट्स एंड अदर बीइंग द फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ एंड अदर असेट्स रिटन डाउन एज पर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। दैट्स ऑल। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6। सी केयरफुली। The following is a balance sheet of Poor Limited as on 31st March 2011. Share capital 20,000 equity share of 10 each fully paid 2 lakh. 512% preference share of 100 each fully paid 50,000. So we have both equity shares as well as preference shares. 10% debenture 1 lakh, trade credit 3 lakh, outstanding expense 50,000. Building machinery, patent, stock, debtors, profit and loss account 1,65,000 and preliminary expenses 30,000. These two are fictitious asset. We should remove this. With a view to reconstruct the company, it is proposed to reduce the value of equity share by rupees 8. 8 रुपये कम कर लो। यानी 10 रुपीस का जो इक्विटी शेयर था उसको 2 रुपये का कर लो। बाई रुपीज 8 कर रहा हूं मैं, 8 रुपये कम करना है। तो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीस, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीस। Reduce the value of preference shares to 60 rupees। अब preference share जो 100 rupees का है उसको 60 rupees का बना देंगे। Reduce the 10% debentures by 10% and reduce the rate of interest to 8%। Here in this case not only the sacrifice is made by shareholders but also by debenture holders। So better to use the word reorganization। Reconstruction लिखने के बजाय it is better to use reorganization because even outsiders are also agreed to sacrifice। So debenture holders wants to reduce their claim by 10%। तो balance sheet debentures are 1 lakh, 1 lakh का 10% 10,000। Now they are agreeing to take 90,000 debentures। तो पुराने जो 10% debentures है उसको कैंसिल कर देंगे और नए 8% debentures इश्यू करेंगे 90,000 के। Remaining 10,000 transferred to reorganization account। Trade creditors sacrifice 1,30,000। Not only debenture holders but also creditors are agreeing to sacrifice their claim by 1,30,000। तो trade creditors 3 lakh rupees है।
3 लाख रुपीज में से 1,30,000 रुपीज दे आर सैक्रिफाइसिंग, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेटा टू रीऑर्गेनाइजेशन 1,30,000 और बैलेंस शीट में उसका अमाउंट रहेगा 1,70,000। 3 लाख में से 130 निकाल दो, 170। Appreciate the value of building by 20%. Normally we depreciate, but here it is given appreciate. Building के वैल्यू को बढ़ाना है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेटा टू रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। Then write off all fictitious and intangible assets. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड फिक्टिशियस एसेट एक है पेटेंट्स, इसको राइट ऑफ कर देना, और फिक्टिशियस एसेट्स दो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इट इज गिवन दैट पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों को राइट ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे। एंड reduce the machinery by 60,000, stock by 10,000 and create provision for doubtful debts 5,000. You are required to give necessary journal entries and balance sheet after reconstruction. So journal entries and balance sheet both we have to make. So first we'll pass the journal entries. ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का है, तो पहले 10 रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल कर देंगे। 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज, दैट वाज द ओल्ड वन, तो वी कैंसिल इट। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड 10 रुपीज, 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू, नया इक्विटी शेयर 2 रुपये का है, तो 20,000 इंटू 2, 40,000, तो 2 लाख रुपीस का पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिए, कैंसिल हो गया, नया इक्विटी शेयर इश्यू करे 40,000 रुपीस। बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, टू रीऑर्गेनाइजेशन 1,60,000, 2 लाख minus 40,000 हो गया। Being the old equity share capital cancelled and new equity shares issued as per the reconstruction scheme. Preference. Preference share capital, earlier there were 500 preference shares, 500 preference shares of rupees 100 each, इसको कैंसिल करना है, तो 500 इंटू 100 50,000, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड 100 रुपीज 50,000 कैंसिल। अब नया जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे 60 रुपीज का इश्यू करेंगे, तो 500 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 60 रुपीज 30,000, तो न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू 30,000, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू 60 रुपीज 30,000। अब 50,000 में से 30,000 निकाल दो, रिमेनिंग 20,000 रुपीज ट्रांसफर टू रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। Being the old preference share capital cancelled and new preference share issued as per reconstruction scheme. Now building. Building account is required to be appreciated. बढ़ाना है बिल्डिंग को, कम करना है तो बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे, बढ़ाना है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेटा टू रीऑर्गेनाइजेशन 40,000, 20% I think. Yes, 20% we have to increase. बिल्डिंग 2 लाख रुपीस का है, बैलेंस शीट में वैल्यू बिल्डिंग 2 लाख रुपीस का है, उसका 20% इंक्रीज कर दो 40,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेटा टू रीऑर्गेनाइजेशन 40,000. Being the value of building appreciated by 20%. Next, after building 10% debentures. The old debentures 10% debentures of rupees 1 lakh. They have agreed to sacrifice 10% of their claim. तो 1 लाख रुपीस का 10% 10,000 रुपीस छोड़ दिए, सैक्रिफाइस कर दिए, तो नए डिबेंचर्स जो देंगे वो 90,000 के देंगे। तो 10% डिबेंचर्स ओल्ड 1 लाख टू 8% डिबेंचर्स न्यू 90,000, 10,000 रुपीस टू रीऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी पैसा सैक्रिफाइस हो रहा है उसको निकालकर रीऑर्गेनाइजेशन में डाल दिए। नाउ बाय यूजिंग दिस रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट विल रिड्यूस द एसेट्स। हो गया। Then trade creditors. The trade creditors have agreed to forego their claim up to 1,30,000. 1,30,000 रुपए तक अपने क्लेम को फोरगो करने के लिए रेडी हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेटा टू रीऑर्गेनाइजेशन 1,30,000. Being the claim of trade creditors reduced as per reconstruction scheme. Now we are using the reorganization account. First entry reorganization was created by 1,60,000, second 20. So 160 plus 20, 180. 180 plus 40, 220. 220 plus 10, 230. 230 plus 130, 360. So totally 3,60,000 rupees balance we are having in reorganization account. अब डेबिट कर देंगे reorganization account डेबिट 3,60,000.
अब प्रॉब्लम में दे दिया कि पहले फिक्टिशियस एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर देंगे। तो फिक्टिशियस एसेट, P&L अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेटेंट, ये तीनों जो बैलेंस शीट में दिया तीनों को क्रिएट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, निकल गया। उसके बाद मशीनरी हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 60,000, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड बाय 5,000। After taking all this, still we are having some balance left in reorganization account. That balance will be transferred to capital reserve. The balance remaining in reorganization account is 50,000. That 50,000 is transferred to capital reserve. So narration, being the fictitious asset and intangible asset written off and other assets written down as per reconstruction scheme, the balance being transferred to capital reserve. That's all. The journal entry is completed. Now we are required to make the balance sheet. अब बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट सिंपली वी मेक एंड राइट द नोट नंबर। इन नोट्स वी विल राइट डाउन द अमाउंट्स। तो शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एवरी प्रॉब्लम वी आर हैविंग फर्स्ट नोट शेयर कैपिटल, सेकंड नोट रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। Assets, non-current assets, fixed assets, tangible, intangible, current assets में inventory, trade receivable, total. That's all. This is the blank balance sheet. Now we'll take one by one. First note number 1 is the share capital. Now presently यहाँ पर है share capital. 20,000 equity share of ₹2 each. अब देखिए यहाँ पर first entry pass करते हैं। तो new shares, equity shares are 20,000 shares, ₹2 each. तो 20,000 into 2, 40,000. 500 preference shares of ₹60. नया preference shares, new preference shares, 500 preference shares of ₹60 each. तो 500 into 60, 30,000. तो 40,000 equity shares, 30,000 preference shares, ₹70,000 is the equity share capital. That will be taken under note number 1 in balance sheet. अब reserves and surplus. Earlier there was no reserves, but now there is a capital reserve created here. ये एंट्री पास करते हो कैपिटल रिजर्व अराइज हो गया, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेंगे कैपिटल रिजर्व 50,000 हियर, कैपिटल रिजर्व 50,000, टेक इट हियर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स लेना है। अर्लियर बिफोर दिस कैपिटल रिडक्शन डिबेंचर्स वेर 1 लाख, 10% डिबेंचर्स 1 लाख. Now the 10% debenture gone, cancelled. Now 8% debentures was issued at 90,000. Here 8% debenture 90,000. Take this 90,000 here. Now trade payable creditors. So creditors earlier before capital reduction creditors were 3 lakh. Out of 3 lakh, how much amount they have foregone here? 1,30,000. So 3 lakh minus 1,30,000, 1,70,000 remaining creditors. So creditors 1,70,000. Other current liability. The other current liability given in the problem, outstanding expenses. So before reconstruction, the outstanding expenses were 50,000 and we have not made any change. They have not foregone any amount. Outstanding expenses अपने amount को forego नहीं करे, कहीं पर भी नहीं आया, तो इसका मतलब again 50,000 will remain same. तो other expenses are outstanding expenses 50,000. Liability side completed. The total of the liability is 4,30,000. Now we must get 4,30,000 in assets also. So tangible assets, fixed assets but tangible assets. Now see here, building 2,40,000. Actually before reconstruction the building value was 2 lakh only. There is appreciation on building by 40,000 here. Appreciation of building by 40,000 बढ़ा दिए building के value तो 2,40,000. Machinery का नया value 70. Old value machinery was 1,30,000. Before reconstruction 1,30,000. How much machinery was reduced? 60,000. 1,30,000 में से 60,000 rupees reduce कर दिए तो new value 70,000. तो total tangible assets हुआ 3,10,000. Tangible. Intangible nil. Inventories का मतलब होता है स्टॉक को reduce करेगा. Yes, 10,000 rupees reduce करे. पहले 80,000 rupees का स्टॉक था. In the old balance sheet 80,000 stock, 10,000 rupees reduced. Now it is 70,000. Trade receivable are the debtors. Debtors are 55,000 in the
ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन 55,000, उसमें सर राइट ऑफ कितना कर दिए 5,000 रुपीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 55,000 माइनस 5,000 इज 50,000, तो ये ट्रेड रिसीवेबल 50,000. The total of the assets are 4,30,000. Complete problem I have explained. I think after doing some these 6 problems, you got a good confidence in solving the problem and understanding the concept of internal reconstruction. So we'll continue this in the next video. The 7th problem will continue in the next